So hey guys, let us look at the history of evolution of repertory. ये क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए पूछते हैं एग्जाम में. फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन इन विच विल राइट टुडे रेपर्टरी हैज़ ऑलमोस्ट बिकम एन इंडिस्पेंसिबल एड टू होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स. आज रेपर्टरी एकदम ज़रूरी हो गया है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए. The advent of repertory has facilitated the maximum utilization of the facts recorded in the numerous pages of homeopathic literature. Next, we will write Hahnemann's efforts in making repertories. As early in 1805, his book Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis Sive Insano Corpore Human Observatis contained an index in the second part. He also published another short repertory, Symptoms Dictionary, in 1817 in Latin. He also posed questions regarding the difficulty of finding out the simillimum out of many similars. Dr. Richard Hale wrote about Master's love for repertories. For professional use in the consulting room and at the bedside, he required and promoted in every way possible the issue of repertories arranged on a definite and clear plan. He had several such aids, partly drawn up by himself and partly compiled by students in accordance with his instructions. Hahnemann's reference material in 4 volumes ran into 4,239 pages. Perhaps this prompted him in 1829 to write to his friend Rummel as to how useful a good alphabetical repertory would be once it is compiled. Hahnemann's pupil Dr. Gross compiled 2 volumes of a repertory which never appeared in print. डॉक्टर हानेमन ने फर्स्ट रेपर्टरी लिखी थी विच वॉज फ्रैगमेंटा दी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिव्स. उसके बाद उनके जो प्यूपिल है डॉक्टर क्रॉस, उन्होंने 2 वॉल्यूम्स ऑफ रेपर्टरी लिखे जो कभी प्रिंट नहीं हो पाए. दूसरे उनके जो प्यूपिल है मतलब स्टूडेंट डॉक्टर रकर्ट, उनको डॉक्टर हानेमन ने अपॉइंट किया एक रेपर्टरी कंपाइल करने के लिए. उन्होंने इस पे 8 साल काम किया और 1830 में उन्होंने एक प्रिपेयर भी किया, बट इट वॉज नॉट फाउंड अप टू द मार्क. इसलिए डॉक्टर हानेमन ने जार को एम्प्लॉय किया फॉर कंपाइलिंग अ रेपर्टरी. उन्होंने लिखा कि इफ़ गॉड परमिट्स जार विल वर्क आउट द सिम्टम डिक्शनरी एंड आई शैल कॉन्ट्रीब्यूट व्हाट आई कैन. उस टाइम पे जार अपने फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिर उन्हें उतना टाइम नहीं मिला ये करने के लिए. ही ऑल्सो हिमसेल्फ कंपाइल्ड, इसलिए डॉक्टर हानेमन ने खुद एक रेपर्टरी कंपाइल की 1830 टू 1832 में, विच कुड नॉट बी पब्लिश्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. उनको खुद ये वर्क इम्परफेक्ट लगा और उनके जो पब्लिशर थे मिस्टर आर्नल्ड, वो उस पोजीशन में नहीं थे कि वो उसको पब्लिश कर सके. इसीलिए उन्होंने जो रेपर्टरी बनाई थी वो पब्लिश नहीं हो पाई. इट इज़ ऑब्वियस दैट मास्टर हैनेमन स्ट्रांगली फेल्ट द नीड ऑफ अ रेपर्टरी, डेवलप्ड इट इनटू एन आइडिया and started working in that direction, but for various reasons he could not publish it. So the profession had to look upon others for a useful repertory. Now early repertories में डॉक्टर क्रॉस, डॉक्टर रकट, जार और के अनसक्सेसफुल एफर्ट्स के बाद आते हैं डॉक्टर वॉन बर्निंग हुसैन. ये डॉक्टर हानेमन के मोस्ट इंटीमेट डिसाइपल थे. उन्होंने सीरियस अटेम्प्ट लिया इन द डायरेक्शन अंडर हानेमन्स इंस्ट्रक्शन. हिज पायनियरिंग वर्क Repertory of Antisoric Medicines, which was published in 1832, was not only successful but it became a progenitor of all the later repertories. इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि डॉक्टर क्रॉस, डॉक्टर रकट और जार के अनसक्सेसफुल एफर्ट्स के बाद वॉन बर्निंग हुसैन, जो कि डॉक्टर हानेमन के बहुत करीबी डिसाइपल थे,
उन्होंने बहुत सीरियसली अटेम्प्ट किया हैनिमन के इंस्ट्रक्शन के अंदर, और उनकी जो पायोनियरिंग वर्क थी विच वाज रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन्स, ये पब्लिश हुई 1832 में। ये सिर्फ सक्सेसफुली नहीं हुई पर ये प्रोजेनाइटर भी बनी बाकी सारे रेपर्टरीज़ की, मतलब इनसे इंस्पायर होके बाकी रेपर्टरीज़ तैयार हुए थे। बाद में जार्स रेपर्टरी वॉज फाइनली पब्लिश्ड इन 1835 इन जर्मन लैंग्वेज। उसके 3 वॉल्यूम्स थे और 1052, 12,054 और 200 पेजेस थे रिस्पेक्टिवली। सेकेंड एडिशन was enriched by P.F. Curie and was published in 1847. In course of time, Jar's repertory underwent many editions. 1835 में it was published and उसके बाद बहुत सारे editions बने उसके। फोर्थ एडिशन जो है वो 1851 में पब्लिश हुई थी एंड सेकेंड 1847 में। So it's like 1835, 1847, 1851. इस फोर्थ एडिशन में बोनिंग हुसैन्स एवेल्यूएशन मेथड अडॉप्ट किया था। In 1953 it was translated and published by Hempel. So it goes like 1835 first edition, 1847 second edition, 1851 fourth edition and 1953 translated and published by Hempel. Dr. Constantine Herring preferred this edition. In 1959 the repertory contained additions from Possard's work and was further revised and enlarged by Hempel. This revised edition was considered the fifth edition. 1959 में इस जार्स रेपर्टरी में पोसार्ड्स के वर्क भी ऐड किए और इसको फर्दर रिवाइज एंड एनलार्ज किया हेम्पेल ने। ये रिवाइज एडिशन को फिफ्थ एडिशन के नाम पे बोला गया। द थर्ड वॉल्यूम जो था जार्स वर्क का, इट फॉर्म द रेपर्टरी, whereas जो अदर 2 वॉल्यूम्स थे वो मटेरिया मेडिका थे। This repertory was improved with successive editions which made some doctors believe it to be a precursor of Kent's repertory. Boning-Hussein's work can be truly considered as the beginning of a new era in accepting repertory as an additional, valuable and indispensable tool. Important years जो history of repertory में है, repertories which came up during the lifetime of Hahnemann. 1805 में Dr. Hahnemann published Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis Sive in Sano Corpore Humano Observatis. 1814 Dr. Hahnemann published a short repertory in Latin. 1828 Hartlaub and Trink Repertory in German. 1828 Hahnemann Repertory in 2 volumes in German in manuscript form. In 1829 Ernst Ferdinand Ruckert a repertory, Weber a repertory with a preface by Hahnemann. 1830 Weber systemic work of antisoric remedies. 1829 Gustav W. Gross a repertory. 1829 Frederick Jacob Rummel a repertory. 1832 Boning-Hussein's repertory of antisoric medicines with a preface by Hahnemann. 1833 Glaser first alphabetical pocket repertory Leipzig. 1833 Weber Pescher Repertory of purely pathogenetic effects, preface by Hahnemann. 1835 Boning-Hussein Repertory of medicines which are not antisoric. 1835 Dr. Jar's Symptom Repertory 3 volumes in German language. 1836 Boning-Hussein an attempt at showing the relative kinship of homeopathic medicines. 1835 Ruoff a repertory published at Stuttgart.
1838 a repertory published in Allentown Academy by C. Herring. 1840 Ruoff, a repertory of nosology. 1843 Lafitte. Repertories which came after 1843: 1846, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 59. 46 BTPB. 47 Hempel Bonning Hussein's Repertory. 1848 Clophar Muller Systematic Alphabetical Repertory. 1849 Muir Repertory. 1851 Bryant and Alphabetical Repertory. 1853 Possart, a repertory of characteristic homeopathic remedies. 1854 Lippe, a repertory of comparative materia medica. 1859 Seifert, repertory by English homeopaths. About this time in England, the following repertories were in use: Buck's Regional Symptomatology and Clinical Dictionary, Hempel's Repertory, Curie's Repertory, Hahnemann Society Repertory by Drysdale and Dudgeon. About this time, American homeopaths were busy compiling repertories. They were 1873, 74, 79, 1880, 81, 1996. Berridge, Repertory of Eyes, Granier of Nymphs, Lippe, Repertory of More Characteristic Symptoms of Materia Medica, T.F. Allen, Symptom Register, Herring, Analytical Repertory, Gentry, Repertory of Concordances, Nair, Repertory of Herring's Guiding Symptoms. Keynes Repertory. During the last quarter of the 19th century, the area of repertory became overcrowded with an unusually large number of repertories of different kinds. This created chaos and confusion in the profession and prepared a suitable ground for the emergence of a repertory well organized systematically and planned based on a solid philosophy. This was successfully accomplished by Kent in 1897. This started a new era of middle time repertories. Era of regional repertories. Many stalwarts started making notes of their clinical experiences and published several clinical and regional repertories. Repertory of Diarrhea by Bell, 1869. 1873 Repertory of Eyes by Berridge, Desires and Aversions by Guernsey. 1879 Repertory of Fever by H.C. Allen, Repertory of Foot Sweat by O.M. Drake. 1880 Repertory of Modalities by Worcester, Repertory of Hemorrhoids by Guernsey. 1882 Repertory of Intermittent Fevers by W. Allen. 1883 Repertory of Sensation, Holcomb. 1884 Repertory of Cough and Expectoration by Lee and Clark. 1892 Repertory of Digestive System by Urkel McMichael. 1894 Repertory of Rheumatism by Perkins. 1896 Repertory of Neuralgias by Lutze. 1899 Repertory of Urinary Organs by A.R. Morgan. 1904 Clark's Clinical Repertory. 1906 Repertory by P.F. Curie. 1908 Sheets Clinical Repertory. 1931 Boger's Times of Remedies. The post-Kentian repertories were 1904 Clark, a clinical repertory. 1905 Boger Bonning-Hussein characteristic repertory. 1915 Boger repertory with synoptic key. 1924 Boger card repertory. 1927 Borig clinical repertory. 1931 Boger Times of Remedies and Moon Phases. 1937 Roberts Sensation as if. 1939 Roberts Rheumatic Medicines. 1959 Jugal Kishore card repertory. 1963 Fatak's repertory. Modern repertories. 1973 Barthel and Will Clunker synthetic repertory. 1990 Kunzli Jost Keynes Repertorium Journal. 1993 Murphy Robin Homeopathic Medical Repertory Indian. 1993 Frederick Schroen Synthesis. 1996 Roger von Zandvoort. 1996 Tiwari Shashikant. 1999 Bakshi The Phoenix Repertory. 2003 Roger von Zandvoort Repertorium Universale. So guys इनों की बहुत सारे बट जितने याद रहे उतने अच्छे हैं एंड आई डिडंट वांट टू स्किप एनी ऑफ दिस बिकॉज स्किप करके क्या मिलेगा, इसीलिए अगर हम बार बार इसे पढ़ते रहे, बार बार ये हमारी आंखों के नीचे से गया तो ही हमें याद रहेगा एंड हम एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएंगे.
इसलिए it was very important for me to read out all of these for you guys. So I know you might be expecting me to show some tricks or something for these, but जितना हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे उतना ही हमारे आँखों के नीचे से जाएगा और उतना हमारे दिमाग में भी बैठ जाएगा. इसलिए रीड इट अलाउड and go through these over and over again so that they'll get fixed in your mind and you'll be able to write it down in your exams.